Hello, everyone. Welcome to the podcast. So, today our guest is Mr. Devang Patel. He is a seasoned professional with immersive 2 decades journey in coaching, consulting, and facilitation. He's the founder of Vintage Point Executive Performance Coaching, specializing in fostering business growth and having a track record of doubling the business value. Presently, Mr. Patel holds esteemed position as an entrepreneurship mentor at multiple incubation centers, including Patel Innovation Center at Birla Institute of Management Technology in Noida, Chaurasat University Accelerator, Marwadi University Incubation Center, Jagrati Enterprises Center Purvanchal, and New Chip Accelerator, among others. He is an internationally accredited coach and a outbound trainer, having received professional business growth coaching training through prestigious International Coaching Federation in the USA. His clientele includes prestigious AC Nielsen, Shaporji Palonji and Sons, Falcons Infrastructure, Sapphire Software Solutions, and many more. Mr. Patel's training journey has been enriched by his participation in management development programs with top-tier institutions such as IIM Bangalore, IIM Calcutta, and IIM Calicut. Furthermore, Mr. Patel boasts an illustrious tenure as a dean at prominent corporate B schools in Gujarat, renowned for its strong foundation in entrepreneurship and blue ocean strategy. Today, we got him on the show with us to discuss this undiscovered topic on YouTube, that is incubation centers. So we are also fellow mentors at one of the finest incubator that India has, and I was discussing things with him, and I thought this is a very important topic for institutes, as I also go to a lot of colleges, I meet a lot of directors, and I see this common knowledge gap of incubation centers, how to set up, what to offer, how to find startups, how to find mentors, what to expect, how to set up the real expectation. And I thought sir is one of the, and I think this conversation would just answer so many questions of so many people. So welcome to the show, sir. So nice of you to say yes. Thank you so much for inviting me to the show. Very good warm evening, morning to everyone from all parts of the world. Thank you. Great. तो सर हम स्टार्ट करते हैं कि ये इंक्यूबेशन सेंटर इज फेयरली अ न्यू कॉन्सेप्ट की पुराना है, कैसा कॉन्सेप्ट है इंडिया में? पहले हम इस पे आते हैं, कब से ये सीजन में आया? The word incubation has been ages old. A mother incubates her child in her womb. So source wahan se hai. And when we see the entrepreneurial scene in India, current Prime Minister Honorable Narendra Modi Sahab started a mission called Startup India a few years back. And then brought the whole startup world into India. तो तब जाके 8 साल के पहले the word incubation center was just coming up. In India, if you see, the larger part of the upper middle class prepares their children to do a great job. And if you see, बच्चे को क्या बोला जाता है? क्योंकि पिताजी ने भी ऐसा ही किया है. The father also is into the same what we call as the job वाला cycle. अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे institution में जाओ, प्लेसमेंट के लिए खड़े रहो, जिंदगी भर जॉब करो, कुछ पैसे बचाओ, लोन लो और जिंदगी जियो. तो एंटरप्रेन्योरशिप और व्हाट वी कॉल एज उद्यम शक्ति या व्हाट वी कॉल एज उद्योग साहसिकता, वो डेवलप करना पहले से ही बहुत बड़ा चैलेंज रहा है. वो एक क्वेश्चन भी है कि क्या वो डेवलप हो सकता है कि नहीं. बट आपका आंसर देते हुए, हाँ, 6-8 साल पुराना कॉन्सेप्ट है. उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए 6-8 साल के पहले स्टार्ट हुआ था. यस. ओके. और सर ये कितनी तरीके के इंक्यूबेटर्स होते हैं जनरली, अगर हम मोटा मोटा डिफाइन करें? क्योंकि हम इंस्टीट्यूट्स में देखते हैं, आईटीज में हैं, आईएम्स में हैं, और फिर हम स्टैंड अलोन इंक्यूबेटर्स भी देखते हैं, जैसे जागृति पूर्वांचल है, और हम लोग प्राइवेट इंक्यूबेटर्स भी देख लेते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा प्राइवेट टच होता है, या कुछ वीसीज के एक्सटेंशंस निकल के आते हैं. सो हम अगर ब्रॉडली क्लासीफाई करें तो क्या इसकी क्लासिफिकेशन होगी? सो यूजुअली ऐसा है कि कोई भी एंटिटी है, कोई भी कॉर्पोरेट है, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, कोई भी इंडिविजुअल है, फंडामेंटल क्वेश्चन इज कि who gets interested in starting an incubation center. The source is, the driver is the person or the team or the entity or the organization. Can be government, can be private, can be individual.
that team or that person or that entity has a core requirement, core ichha, core dream to mobilize people from wherever they are at an X level and make them X plus. So there are many types of incubators. The largest being set up by private and government universities, including IIT. IIT के पास SINE करके incubation center है. So universities have incubation centers. There are privately owned corporate incubation centers. There are corporate firms who set up incubation centers. There are individuals like me who are incubation institutions. So I don't take any funds from the government, but I hatch in entrepreneurs and I mentor and I coach them. So there are individual centric incubation ecosystems, not centers, because a center would mean you require a facility, you require people, you may or may not take government grants, and etc. So हर कोई जो entrepreneurship इंडिया में ग्रो करने की मदद करता है वो इंक्यूबेशन कर रहा है, ऐसा मुझे लगता है, जाने अनजाने में. एंड देन होल कैटेगरी ऑफ दिस फैमिली बिजनेस इकोसिस्टम, जहां बहुत लूजली हेल्ड अनऑर्गेनाइज्ड इंक्यूबेशन सेटअप्स हैं जो कभी बाहर ही नहीं आते. अ फादर एग्जांपल है, ज्वेलरी मर्चेंट, ट्रेनिंग, टीचिंग, कोचिंग, मेंटरिंग हिज सन और डॉटर टू सेट अप और टू गेट इन्वॉल्व इन द बिजनेस. तो उसमें आप देखिए तो वो इंक्यूबेशन एक अलग लेवल का. सो इंक्यूबेशन सेंटर एक वर्ड है, इंक्यूबेशन एक वर्ड है, ये सब जार्गन से मेरे हिसाब से. सो हर कोई जो बंदा या सिस्टम या एंटिटी या गवर्नमेंट या इंस्टीट्यूशन या कॉर्पोरेट जो उद्योग साहसिकता को ड्राइव करने में थोड़ी भी इच्छा रखता है वो इंक्यूबेशन कर रहा है, ऐसा मैं मानता हूँ. ये ज्वेलरी वाला जो एग्जांपल दे रहा हूँ, 1 मिनट, ये ज्वेलरी वाला जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 1.5-2 साल तक वो बच्चे को पानी देना है, झाड़ू मारना है और उससे भी जूनियर वर्कर्स को ध्यान रखना है. नाउ दैट इज इंक्यूबेशन बिकॉज अ फादर इन अ फैमिली बिजनेस is teaching his son, incubating his son to join his family business. May or may not be a startup. So depends on how we look at it. So on a very formal setup, institutional government sponsored incubation centers is one setup. Private universities who don't take government funds and still want to develop entrepreneurship in students and in outside entrepreneurs, that is the other setup. Private public partnerships incubation centers is the third setup. Corporates having incubation centers for their own business growth relating to their own industry is the fifth setup. And corporate having incubation centers who fund startups different or same to their industry is the sixth setup. Family businesses, large corporate family businesses who have family offices, they also have these days become incubation centers. There are multiple types of incubation centers, and the word incubation here means any individual, public or private, family or otherwise, wanting to hatch entrepreneurship. So on a very formal level, there are incubation centers floated by private and government universities, those who deal with student startups. And their fundamental role is to get government grants and give it to the students. Some university and college level incubation centers also work with private entrepreneurs, not for a grant, but it appears me to be family businesses who incubate their own children into their own businesses. Third category would be family offices, large corporate family business houses, those who have family offices. They also are kind of pseudo incubation centers. They incubate ideas, businesses, and within family offices, there are two types. The first category is family offices who incubate similar businesses for their own family business growth. The second type is family offices who incubate any startup entrepreneurs because of their power of money. Some family offices have tied up with venture capital firms and have also become financial aggregators. And very typically, there are some micro VCs or even VCs or angels investors who do startup mentoring and do not call them incubation centers, but they help startups to become fundable. So individuals,
government institutions, private corporates, private universities, standalone non-government, non-university, non-private incubation centers, official, and family offices, and family businesses who help their own children to incubate in their own businesses. So this is the variety largely which is there in India. No, that was really enriching to know so much variety of incubation centers. Very exhaustive. सर कहते हैं कि हम लोग सारे कुछ तो नहीं कवर कर सकते हैं इसमें, बट हम लोग सबसे ज़्यादा कॉमन आप क्या देखते हैं? किस टाइप के इंक्यूबेटर्स सबसे प्रॉस्पर कर रहे हैं, या इंडिया में जो अभी सबसे कॉमनली जो आपने देखा है? प्रॉस्पेरिटी के मैट्रिक्स मुझे अभी पता नहीं है. हाउ डू यू वांट टू मेजर, हाउ डू यू टेल? सो कुछ इंक्यूबेशन सेंटर्स खुद को ऐसा मेजर करते हैं, नंबर ऑफ फंड्स डिसबर्स्ड. कुछ इंक्यूबेशन सेंटर्स मेजर करते हैं नंबर ऑफ पेटेंट्स रजिस्टर्ड. कुछ इंक्यूबेशन सेंटर्स मेजर करते हैं खुद को नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस. बेस्ड इंक्यूबेशन सेंटर्स दे डोंट चार्ज अ फी, but some others charge. Example, Patel Incubation Center BIMTech has 3 levels of programs: Khoj, Prarambh, and Prarabdh. They build the startup for their services and etc. So prosperity and success, I don't know, but largely volume-wise, I can comment that university managed, university affiliated, government fund disbursing incubation centers are volume-wise the highest in India. Nearly every other university, be it state or private, has a incubation center. And fundamentally, there are 2 objectives. One, and a very pseudo objective, I feel, not all students are placeable. Not all students want to be placed. And not all students, even though are placeable, want to do a job. Yeah? Yes. So, इनको क्या करें इनका? So the theme is कि इनको धंधा कराएं. So for taking away the load of placement, and good universities and good business schools these days have become placement agencies is what appears. So these are large in number is what I can suggest. Yeah. तो These सर are हम लोग very इसी large टॉपिक पे in स्टार्ट number. करते हैं. Yeah. तो सर Go हम लोग ahead. अभी हम लोग इसी टॉपिक से स्टार्ट करते हैं. If a university and management institute, and then we'll also cover the other aspects, but let us start with this. If a management institute is willing to set up an incubator, their in-house incubator, तो उनके क्या स्टेप्स होने चाहिए? क्या उनकी मैनेजमेंट होनी चाहिए? क्या उनको रोज बेसिस पे उनको करना पड़ता है करने के लिए? कैसे स्टार्टअप्स को अट्रैक्ट करें? क्या उनको सर्विसेज ऑफर करी जा सकती हैं? एक प्रॉपर, सपोज एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, छोटा इंस्टीट्यूट नहीं है, एक बड़ा अच्छा खासे साइज का इंस्टीट्यूट है जिसमें मे बी 300 MBA के बच्चे हर साल निकल रहे हैं, 3 to 500 के बीच में. और अब आप क्या ऐसे सजेस्ट करेंगे कि हाउ द इंस्टीट्यूट शुड अप्रोच देयर इंक्यूबेशन सेंटर? सो पहले मिथ ये दूर करेंगे कि entrepreneurship is only thought that management students can do it. So पहले मिथ ये दूर करेंगे. आप भले ही ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस का, बट मेरे हिसाब से द स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप कैन बी डेवलप्ड इन एनी फील्ड ऑफ एनी स्टूडेंट. आर्ट्स वाले बच्चे भी एक यूनिवर्सिटी कर रही है जो बीटेक भी कराती है, बीकॉम भी कराती है, बीबीए भी कराती है, सब कराती है. उनको इंस्टीट्यूट सेटअप करना है अपना. मेरा जो कंसल्टिंग और कोचिंग एक्सपीरियंस है एंटरप्रेन्योरशिप मेंटरिंग का, मैंने ऐसे देखा है कि इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स एंड कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स, उनको थोड़ा फ्लेयर एंटरप्रेन्योरशिप का ज्यादा है. फार्मेसी, डेंटल में कम है. सरप्राइजिंगली फिजियोथेरेपी में students want to start their own businesses, IoT devices and etc. I don't know, ये इस इंडस्ट्रीज में जॉब कम है या सेल्फ एम्प्लॉयड बनने में पैसा नहीं है, या मुझे पता नहीं है. तो ये 3-4 केमिकल इंडस्ट्री में जॉब्स ज्यादा है. केमिकल इंडस्ट्री, केमिकल इंजीनियरिंग में लोग कम एंटरप्रेन्योरशिप के लिए तैयार होते हैं. और मेडिसिन में तो एज सच दे आर एंटरप्रेन्योर्स. सो मेडिसिन में ज्यादा, मैंने मेडिसिन इंक्यूबेटर एक भी नहीं देखा. सो assume I am a private university. Doesn't matter if I'm a government university also, but I'm a private university. I have 8-9 years of work already done, and I have between 3,000 to 10,000 students. That's my setup. And I run management, law, physiotherapy, pharmacy, engineering, and paramedical, say dental, ya to nursing. These are the general fields of
study which are kind of available. Now, I assume that the promoter of the private university, which is usually a corporate firm or a large trust, step one, the heads of the university, the promoters, the founders, the president and the chairman should have a desire to do something new, should have a desire to develop an entrepreneurial ecosystem within their university and outside, should feel a pressure of not being able to place everyone. One, because there are no great jobs available. Second, students themselves are not placeable. And third, जो 16-18 साल में स्कूल और हायर एजुकेशन में और ग्रेजुएशन में नहीं हो पाया है, वो आप पोस्ट ग्रेजुएशन में 2 साल में कुछ खास जादू नहीं कर सकते. So the drivers to start an incubation center start at the chairman, president, owner level with a desire to differentiate the university or the B school कि मुझे कुछ नया, कुछ बेहतर, कुछ अच्छा करना है और एक नई फील्ड ओपन करनी है. यानी प्लेसमेंट. See, I mean very clear, the race is for number of students, right? So, I mean, मैं मेरी ads में क्या लिखूं? Imagine there are 20 universities in a district or a city or a state. And if you see any random advertisement of a city, of a university, they will only tell PhD faculty, they will only tell infrastructure, buses, AC classrooms, labs, and they will only tell placements. So, 5 variable के आगे Indian university education system 6-7 साल पहले गई नहीं. So the chairman or the vice chancellor should have a desire कि मुझे कुछ नया करना है, अपनी यूनिवर्सिटी को differentiate करना. That is step one. उनका desire आता है तो then step two is finding someone who will drive. Now ये सबसे बड़ा problem है. Can HODs, deans and directors drive? No. One, they themselves are not entrepreneurs. Second, they're over busy in academic administration, teaching, and with faculty attritions being so high. Third, they're well paid, so they don't have an incentive or a motivation to do some great things. So मेरा experience ऐसा है, I have consulted 2-3 universities to set up incubation centers, और ये process में इसके लिए आपको बोल रहा हूँ. The second step that the promoter should do is they should form a core team of highly aspirational, semi-academic, entrepreneur mindset faculty members. And so मैं ऐसा रहा हूँ. While I was into teaching, I'm like that. Way back in 2004, with only 4 years of teaching experience, I started my career in 1999. My chairman came to me, and in Gujarati he told Devang, मैंने तारा में एक spark देखा है. Devang, I see a spark in you. Maybe his eyes are good, maybe I was good, I don't know what. And then we started something related to entrepreneurship way back in 2004. Not an incubation center, but a center which promotes entrepreneurial knowledge. So 5-6 लोगों की टीम, preferably multi-department, क्योंकि first 2 years तो there's a lot of struggle. Soft launch करना है, and what we tell is conduct entrepreneurial awareness camps. वो second tough है. So one is getting these people, those will not be paid in the first 2 years. उनका teaching load होगा, उनके पास से उनको ignite करना है कि आप समाज का सर्जन करेंगे, आपके थ्रू बच्चे आगे बढ़ेंगे, आपके थ्रू ये वो एक्सेट्रा. सो कुछ भी किए बगैर ये 8-10 लोगों को आपको मोटिवेट करना है, जो टफ है, जो बहुत टफ है. क्योंकि मेजर इंक्यूबेशन सेंटर्स फेल क्यों होते हैं? क्योंकि इंटरनल फैकल्टी को काम देते हैं जिनका खुद एंटरप्रेन्योरियल ड्राइव नहीं है. एंड व्हेन वंस दे गो एंड टॉक टू स्टूडेंट्स, चलो मैं आपको एंटरप्रेन्योरशिप करना सिखाऊंगा, ये वो, बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप एज अ सब्जेक्ट इज आल्सो बीइंग टॉट, व्हिच आई हैव अ वेरी एगनी अगेंस्ट. And I don't know whether it can be taught as a subject. And आप एग्जाम कैसे दोगे? I don't know. बिजनेस प्लान बना के देना है, वो चैट जीपीटी को बोल के बिजनेस प्लान बना देता है. So just being able to prepare a business plan is not entrepreneurship, is I feel. So entrepreneurship is a mindset. Yes. And it has to be cultivated with a lot of vengeance, a lot of power, it's a different level of. I've been an entrepreneurship coach for life. So ये 5 फैकल्टी खड़ी करने में, you can stop me and ask me whenever you want. So there's a big story because 8-9 step है, and I'm only on the second step. Yes. So I'll pause after the second step and we can have some questions. So no sir, you are just going on the right track, and it is very relevant whatever you are saying. ये जो 7-8 जो हाई एस्पिरेशनल बंदे हैं, शायद वो खुद का बिजनेस कर रहे हैं, ट्यूशन कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्टॉक्स कर रहे हैं, ज्वेलरी कर रहे हैं, रिटेल चेन है उनका, उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप का स्वाद चखा है.
वो जाके अगर बच्चों को बात करते हैं तो फिर बच्चों को मजा आती है। बाकी तो कोई पंतु जी बोलते हैं मास्टर, वो जाके बोलेगा एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ आइडिया जनरेशन, आइडिया वैलिडेशन, तो बच्चे सो जाए, है ना। एंड बिल्कुल। एंड दोज हु आर टीचिंग, they need to be trained on how to teach entrepreneurship, how to develop that mindset. So ये कल्चर खड़ा करने की बात है। एंड स्टूडेंट्स आर वेरी humble, very nimble, very raw, very young. एंड हम ट्रिगर करते हैं क्लास में अंडर ग्रेड्स को कि आप कर सकते हैं ये वो दिस दैट। एंड घर पे जाके बोलते हैं तो बाप बोलता है लाफा मारकर, चुप रहे साले, तेरे 10 पीढ़ी में किसने धंधा किया है। एंड दे कितने स्टार्टअप फेल होते हैं। वो बच्चा बोलता है पापा शार्क टैंक, मेरे स्कूल में आए थे, ये वो कॉलेज में आए थे। बोलता मैंने नहीं किया धंधा। सो नाउ, सो इट इज नॉट ओनली इन द फैकल्टी मेंबर हु गोज टू द क्लास, triggers, invokes, pressurizes, pushes, cajoles, I don't know what he does, है ना। And I'm talking of a stream where we are not committing any government money. आजकल तो क्या है, गवर्नमेंट हर स्टेट का स्कीम है। एग्जांपल गुजरात में there is a scheme called SSIP, where in this scheme the government gives 2.5 lakh rupee grant, which is not interest, no, which is interest free, which is equity free, दान under quotes, donation. And the incubation center is the hotspot कि भाई हम आपको 8, 10, 15 करोड़ रुपया देंगे और आपको हम ट्रस्ट करेंगे और आपको हम मंथली रिपोर्ट्स मांगेंगे और हम आपको पैसा डिसबर्स करेंगे और आप स्टूडेंट्स को डिसबर्स करना। अभी होता है कि नहीं होता है पता नहीं है, होने के बाद बैक एंड ट्रांजेक्शन वो स्टूडेंट के पास पैसे मांग लेते हैं कि नहीं पता नहीं है। बट स्टूडेंट सोचता है 2.5 लाख मिल रहा है मेरे, चल ना ट्राई कर लू, कम से कम फीस तो भर दू। And after the third year or after education or after graduation or after MBA or after MSc, he doesn't have to return that money. Now ये जुगाड़ है। So पैसा देख के लाना is easy. Now for generic incubation centers who don't work for government schemes, and with due respect, I have not come across any university in India who does a non-funding incubation center for student startups. For corporate, that means for practicing entrepreneurs or for graduating, जो पढ़ाई हो गई है मार्केट में से आप entrepreneur उठा के लाते हो, they pay to the university for teaching, coaching, consulting, mentoring and training. That's a different model. We are not talking of that model. We're talking of student led startups. So faculty को खड़ा करना, faculty को पैसा देना, उसका teaching load adjust करना, उसके वो बोलता है कि मेरे को सब क्लास में जाना है। Now the directors or HODs will tell, मैं तेरे को दूसरों को कांटेक्ट करने नहीं दूंगा। So imagine the poor faculty, and I have been one from 2010 to 2014 in a private university in Gujarat, I will not name. I have been one. So promoter फोन करता है, देवांग तू बढ़िया बंदा है, तू मेरे लिए काम करेगा, तू कर सकेगा। मैंने हाँ सर मुझे भी करना है, मुझे भी मजा आ रही, अभी मैं तेरे को पैसा नहीं दूंगा लेकिन बाद में अपना इसको एक फ्रॉम अ पर्सन सेंट्रिक idea, it will become an institution centric idea. So I want you to pre-work on this. So are you ready? Yes sir, I am excited. मैं जाता हूँ मेरे HOD के पास, सर प्रमोटर ओनर कॉल्ड, हाँ he calls you directly, why did not he go through me? मेरे थ्रू जाना है ना उनको, तो ईमेल भी नहीं आया है, तो ये आपको डायरेक्ट कैसे फोन कर सकता है? क्या चाहिए बोलो। सर ये 2 क्लास एडजस्ट करने पड़ेंगे क्योंकि मुझे केमिकल इंजीनियरिंग में प्रेजेंटेशन करने जाना है। क्या प्रेजेंटेशन करोगे आप? नहीं नहीं क्लास तो आपको खत्म करने पड़ेंगे। तो ये जो प्रोसीजरल हैसल्स, ईगो मैनेजमेंट, HOD नॉन एंटरप्रेन्योरियल रहना, ये भारत का उद्योग साहसिकता 80% से कम कर रहा है। ये बंदा तैयार है, फैकल्टी पैसे के बिगड़ करने के लिए तैयार, स्टूडेंट तैयार है, स्टूडेंट जस्ट वांट अ डायरेक्शन। एंड दूसरा एक सोशियो पॉलिटिकल इकोसिस्टम कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में डेवलप होता है। फैकल्टी मेंबर्स हैव देयर पेट ग्रुप्स, उनको हम पेट थियरी, पेट ग्रुप्स बोलते हैं, यानी झुंड होते हैं, मॉब्स होते हैं। यानी अगर एक कॉलेज में 10 फैकल्टी है और 500 बच्चे हैं तो 50-50, 60-60 डिवाइड हो जाते हैं। यानी तू किसका बंदा? तू मोहन का बंदा, तू राम का बंदा, तू देवांग का बंदा, तू अली का बंदा, ऐसा। एंड देन दे ट्रीट द फैकल्टी एज अ मेंटर गॉड, नॉट एज अ मेंटर बट एज अ गॉड। तो उसका जिंदगी का सारा प्लानिंग ये बंदा करता है, ये फैकल्टी। अभी आप समझ रहे डायनामिक्स बहुत, बिल्कुल जितना दिखता है उतना सिंपल नहीं है। हाँ, आप बहुत इलेबोरेटली करके बता रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ लेकिन जितना दिखता है उतना सिंपल नहीं है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। तो
और वी कैन टॉक कंटिन्यूअसली, बट आप मुझे स्टॉप कर दें। सो ये अगर एक स्टूडेंट, मैं वो फैकल्टी हूँ, प्रमोटर का फोन आया, देवांग आप बढ़िया हो, आप ये सर जाएंगे सर, मेरे ही डिपार्टमेंट में मेरे ही लोग, फिर वो स्टूडेंट वहां ही जाएगा, मेरे पास तो आएगा नहीं। सर मोहन सर, रीटा मैडम, देवांग सर मेरे क्लास में आए थे। अच्छा, डीन ने उसको मेरा क्लास दिया ही कैसे? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, क्या हुआ बोल बेटा? सर वो धंधे वंदे की बात कर। अरे उसका खुद का कुछ धंधा नहीं, वो तेरे को क्या सिखाए? सो जो 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 अच्छा है वो कौन है? फैकल्टी अच्छा है, स्टूडेंट अच्छा है। जो बुरा है वो कौन है? दूसरे फैकल्टी, एचओडी, फैमिली। अभी देन द रेस बिकम्स द शोल्डर ऑफ द फैकल्टी कि वो कितना खींच पाता है वॉलंटरली, विदाउट मनी, विदाउट टारगेट्स, etc. So there is one way to look at it. These are I'm talking at a level of incubation of an incubation center. Yes. That's what we are discussing. Assume ये लड़ाई लड़ ली, assume ये हो गया, assume 50-500 बच्चे तैयार हो गए, हमको कुछ करना है नया और पैसे दे सकते हैं या वॉट एवर। सेकेंड लेवल ऑफ लड़ाई इज उनको सस्टेन कैसे करना, क्योंकि वो आपका ना, इफ यू में फ्लोट है प्रोग्राम, एग्जाम्पल 100 आवर्स प्रोग्राम या तो मीटिंग्स, आई डोंट नो व्हाट, सो यू नीड टू डू समथिंग। इंक्यूबेशन मींस सपोर्ट, राइट? एंड अगर आप गवर्नमेंट का पैसा लेके डिसबर्स कर रहे हैं तो गवर्नमेंट का तो प्रोसेस है, आइडिया जनरेशन, आइडिया वैलिडेशन, तो मिनिमम ये वायबल जैसे प्रोडक्ट। आपने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का बताया, क्या ये आईटीज आईएम्स में भी ऐसा ही होता है क्या, कि वहाँ कुछ बेटर होता है सिस्टम? आई डोंट वांट टू नेम, बट वहां ज्यादा खराब, ओहो। वहां तो ईगो और भी ज्यादा है। लेकिन उनको फायदा यह है कि गवर्नमेंट ट्रस्ट दोज इंस्टीट्यूशंस ब्लाइंडली, एंड देयर इज नो लिमिट टू funds which IITs and IIMs get. IIMs have just recently got, IIM Ahmedabad has got 230 crores for CIIE, Center for Innovation, Incubation and Entrepreneurship in IIM Ahmedabad. But it's an independent center. They don't pick up IIM Ahmedabad students. So IIM Ahmedabad students are allowed to join the center after they complete their studies. And is it open for others also, outsiders also? But it's a tech-based incubator, so they have a strict process for entry and whatever. 3 of my friends got incubated. 2 of them refused, that they don't want to get funding from IIM. One because so it depends on the policy. We'll talk about it later. But some incubation centers want equity after mentorship. Some incubation centers have forceful appointment of their own men and women as mentors in the startup entrepreneurs team. And some are so rigid. Some incubation centers are so rigid, so bureaucratic, so process oriented. I mean, not some, largely all. They just want to show that they're doing some work on government paper. So they don't do it for the spirit. They do it for showcasing that they are following a government policy or a norm. यानी वो बंदा बोलता है कि मुझे बिजनेस प्लान नहीं बनाना है, तो बिजनेस प्लान बनाना कंपलसरी थोड़ी है। नहीं, तेरे को सबमिट करना ही पड़ेगा। नहीं, पिवट हो जाते हैं सर, रियल लाइफ में कितना पिवट होता है सब कुछ, करने कुछ जाओ होता कुछ है। सो रेस फॉर गवर्नमेंट फंडिंग, सो मैं उनको पोस्ट ऑफिसेस बोलता हूँ, दीज आर नॉट इंक्यूबेशन सेंटर, दीज आर पोस्ट ऑफिसेस, और ये गवर्नमेंट का फंड डिसबर्स करती हैं। एंड आई डोंट नो, बट rating agencies like NAAC and others, they want to see how much fund was disbursed. कुछ जगह पे पैसे देते ही नहीं और गलत फर्जी प्रोफाइल चलती रहती है, सो गंदा काम है। कुछ जगह पे जेन्युइन, और फैकल्टी को मेंटर में बिठाते हैं। अभी मेंटर कौन आएगा? तो वो भी अपने भाईबंद दोस्त हो जाए कभी कभी, भाई तू आ जा। सो फैकल्टी को मेंटर बनाना मुझे तो बहुत गंदा लगता है। इट इज अ वेरी वेरी बैड थिंग। एंड I have been a firm believer of non-scientific entrepreneurship for my life. I'll suggest you and all the viewers also to be that. So there is a lady called Dr. Saraswati. She has written a book called Effectuation. And my entrepreneurial journey individually, and my coaching journey in entrepreneurship, and my teachings and trainings and coachings and mentoring for startups and entrepreneurs has been on that. It's a book, we can discuss it later, but single line summary of that 400-page book is that you don't need to be scientific in entrepreneurship development. You should throw your business plan in the dustbin. And this stupid process of
idea generation, idea validation, MVP, business plan, commercialization, scale up, exit, and funding is actually cutting away around 80% of the entrepreneurial behaviors in India, because I'm forced as a student or a startup to do something which I don't want to do or I cannot do. Now, assume if I cannot produce an Excel sheet in a business plan, I'm thrown away by this incubation, so-called incubation Yes. center. Yes. So Saras, I'll stop after 1 minute and then you can ask me further question. Saras talks about one single line summary. Do with what you have, start with what you can, and develop skin in the game by negotiating with whosoever comes on your way. You have an idea to develop a pen. Good. What do you have at home? I have 3 or 4 plastic people. I have my brother or sister who can do validation. I have 50 WhatsApp contacts in my phone. Fine. Start with that. Develop a makeshift pen. Do research with what you have. Try to sell to them. Try to talk to 20 other people. Go and talk to a neighbor. Seek ideas. No, he will tell, इसमें ये pen डाल दो, इसमें ये rubber डाल दो. Sir, what is your skin in the game? Okay, I know a rubber person. He can supply 10 rubbers to you. Great. What do you want in return for this? Nothing. Now take those 10 rubbers, develop a new pen, go out again. Now that is entrepreneurship. And then it can be scaled up, right? So she has 5 principles, but we'll not discuss about that. Now, this model, which is the real on-ground model of entrepreneurship, these incubation centers don't want to follow because the government doesn't want to follow that. So if entrepreneurial energy in India has to grow, we have to actually grow entrepreneurship via academic institutions by the spirit of it. So when I take my entrepreneurship awareness camps and sessions, I start by telling, do you want to do business? Yes, no. Why you don't want to do? Sir, because, so I remove the myths in the first 10 minutes. My parent did not do it. There is capital involved. There is risk in Falan. So what do I tell is, okay, I don't want any capital for you to invest. Then 50% of them raise. I don't want you to take any risk in the business. Then other 20% raise. Then I don't want to use your skills. I'm not worried whether you are a male or a female. I'm not worried whether you are from a village. I'm not worried whether you're scored in the class, not scored in the class. You just tell me how much time are you able to give per week. Sir, 15 minutes. Sir, 2 days. Sir, 7 days. Done. I will shape up a business model for you for that. Now let us work. Wow. And I actually make them start a small business within the class. So they develop a product from our paper and they sell it. And now they get excited. Wow, I can do it, boss. I mean, I can actually prepare a paper boat and have varieties of it. And I have a sales pitch. And so that desire I cultivate. And no business plans, please. And zero capital business. Example, and then I can come to you. I went to a marriage and a lady came out from a BMW 320 in Ahmedabad. And then I asked, Madam, what are you doing? So, well, sir, I'm into the Mehndi business. Wow, how many years? 4 years. Now, if you are affording a 32 lakh BMW 320, what is that you're doing? So, well, I have 72 ladies with me who are freelancers. I don't pay any salary to them. And they put Mehndi during a marriage. What is the per marriage billing that you do? And I give this example to the class. What is the per marriage billing that you do? Sir, per hand, bride and groom and family, 3,000 rupees per hand. So per body is 5,000 and legs. So per person is 20,000 for the bride and the senior family. And for others, oh, sir, they are 500 rupees, 1,000 rupees. How do you get the designs? Sir, Pinterest and Google. And how do you get the Mehndi cones? Sir, we don't pay. The client pays. And how do you advertise? Sir, I have a free of cost Instagram page. I have not given a single paid ad on Instagram. How do you prepare reels? Sir, what are you talking? There are 500 the tools available on Play Store for free reels. Sir, 90% of my business comes from Instagram and 10% comes from referrals. 4 years down the line, 30, I got a new car and I'm always free. My people are always free. I'm doing women empowerment business, sir. Now, once you give these examples, the entrepreneurial spirit comes. My problem is, and I'll stop here. My problem is these incubation centers. They don't do. Yes. They Because don't they know don't how have to do the right this. mentors, maybe. They don't want mentors. No, it is run by an academic. You don't understand. Yes. Run by faculty and HODs.
Yes. They run. So that's the problem. And usually, I don't know where it has come from. Like what you also told, the management HOD is the Balika Bakar somehow. So I don't know. With due respect, I mean, sorry, huh? I mean, so and he understand nothing on engineering and technology. कोई ऐप Very बनाने का practical. मॉडल लेके आएगा तो उसको आते. He knows business. I am fine, but so तकलीफ है. Yeah, you तो can सर you अब can ये raise. बताइए कि कुछ कोई पॉजिटिव इंक्यूबेशन सेंटर्स के बारे में बताइए जो आपने देखा हो। ये एकेडमिक वाले अरे तो काफी समझ में है. आ So गए। ये जनरल मैंने बोला, बट चेंज आ रहा है अभी. हाँ, चेंज आ रहा है. So कुछ कुछ so we ऐसे can divide. पॉजिटिव इंक्यूबेशन सेंटर का आपने कोई केस स्टडी ऐसी देखी होगी जो उसका क्या हाँ. मॉडल है, वो कैसे रन होता है, वहां पे कैसे लोग Now, स्टार्टअप्स और if एंटर। you permit me to name, I can name a few. If you can permit me, names अरे are okay. प्लीज प्लीज Ah, प्लीज। okay. So I will divide the Indian academic system into three universities into three levels: super progressive, semi-progressive, and dull and dusted. So the dull and dusted are the government-sponsored universities. वहाँ काम नहीं हो रहा. Example: polytechnics. Polytechnics are given a grant of 10 lakh rupees and to keep. So सो as I वी was वर, telling you, यस यस, हाँ, सो वी वर there डिस्कसिंग will. कि हाँ कि हम लोग कौन से बेस्ट, मतलब आपके कुछ एक्सपीरियंस में कोई ऐसे अच्छे एकेडमिक इंक्यूबेटर्स हैं तो प्लीज आप वो शेयर करिए, और क्या उनके मॉडल हैं, व्हाट इज इट दैट दे आर गेटिंग राइट, व्हाट अदर्स आर नॉट। So as I told that there are three types of universities in India, largely from entrepreneurship development front. One is the progressive university. These are corporate sponsored universities where the corporate has a desire to spend money, give space to the incubation center and appoint professionals or appoint senior faculty members, and not to make them teach, but these guys run the incubation center on themselves. Mica has a very good incubation center. UT Rao is running the center. He doesn't take classes. Marwadi University has Dr. Amit Sata. I'm also very closely involved. He is a professor, department head, but doesn't take classes. He has a 6-member team, and he has been given 4,000 square feet of space within the university. There are very many. IIM Ahmedabad, as I told, has a parallel independent incubation center where the faculty members have no say. I mean, so it's an independent thing. So, and very many. So Jindal Global School is doing a good job. Nirma University is doing a good job. Pandit Deendayal University is doing a good job. D.Y. Patel in Maharashtra is doing a good job. Symbiosis is doing a good job. So, but it requires an orientation. Yani, am I producing only job-oriented graduates, or do we also want to develop on this? So these are the progressive ones. What do they do? Very specific. They appoint non-academic faculty members as the head or the chair. There's a fancy designation called CEO. I know around 25 CEOs of 25 various incubation centers, and I don't want to name. TIS Bombay is doing a wonderful job. So they have appointed Professor Dr. Satyajit Majumdar as a chair for their incubation center, and they have made themselves self-sustainable in 3 years. Wonderful job. But it So depends on the they man. also earn money for themselves for their Yeah, unit. I'll tell you what is the They revenue. just I'll don't tell you what disperse is the the government funds, but they earn money out of. No, I'll tell you what is the revenue model. I'll tell you. So I'll tell you. So they charge a consulting fee for getting outside funds, 4 to 8% of the funds. If you can get from outside angel investors or VCs, they take a fee for that. They take a fee. So there's a consulting fee, and there's an equity. So 3 to 6% of equity for mentorship and incubating. And of course, there are private non-academic incubation centers, those who have tied up with agents who help them get government funds. These agents charge between 3 to 8% of the funds that come to the government that come through the government via the university. So they earn out of it. They earn Okay. out of it. And they also earn notionally by decreasing the load on the placement team. Because if you want to improve placements, you have to give great salaries, you have to give incentives to the corporate. A good placement cell in any university will have 8 to 10 employees, and it's a costly affair. So if some more number of students are opting out of placements because they want to do family business and they're incubated in doing family business, or they are wanting to do entrepreneurship, that load on the placement center goes down. The problem is academics is not oriented to entrepreneurship, but yeah. So these are the progressive universities. Second are semi-progressive universities who do for the sake of doing, but are struggling hard, and they want to do something, but they're not clear as to what they have to do.
So they appoint the faculty members and they don't give a space and they do some programs. And I have not found a university who does independent non-government incubation as of now. नॉन गवर्नमेंट एज इन Non-disbursement, गवर्नमेंट से फंड्स नहीं ले रहे हैं और इंक्यूबेशन कर रहे हैं. non-grant, non-grant, non-government, independent, autonomous, only for that university, pure incubation without money and without grant, without taking money from the students and without taking government grant. तो वो स्पेस अभी पूरा खुला है. ओके, तो उनको फायदा भी क्या मिलेगा? बच्चों से ही पैसे नहीं लेंगे और उससे भी नहीं. So that depends on the moral and the vision. So if you're an academic organization, is your role only to create job seeking graduate? That's the question which I am asking. If yes, fine, give placements, but not all are एज अ सर्विस. यूनिवर्सिटी हैज टू डू इट एज अ सर्विस अगर वो ये मॉडल पे आती है. Yes, why not? Why not? Placement के लिए आप चार्ज नहीं लेते हो. You give placement, but you don't charge fees. Yes, very nice. Why? So if you give entrepreneurship as a service, you should not charge fees. नाइस. तो सर अब हम उस पे आते हैं कि जो बेटर कॉलेजेस आपने बताया जो प्रॉस्पेरस हैं, प्रोग्रेसिव हैं, जो उनका क्या मॉडल है एंड हाउ आर दे क्रैकिंग इट? अगर हम बहुत ही I'll tell you. 2-3 पॉइंट में कर ले, ज्यादा एलैबोरेट ना करें. Yeah, I'll tell you. So I'm currently helping build a family business accelerator in Marwadi University. So it's not an incubator, it's an accelerator. Point number one. So what is the difference between incubation and accelerator? Is incubation works with you at an idea level and pushes you hard to go to the next level and etc. And then sets you free. Accelerator picks you up when you become free. So for getting the next level of business growth, you come to an accelerator. So family business में ये space बहुत बड़ा है. In the university, Marwadi University, where I'm currently associated with, we have around 11,500 students, and around 4,500-5,000 students are from family business. Maybe a small pan shop. Where is this located? Marwadi University. Where is it located? Rajkot in Saurashtra in Gujarat. Okay. And so I'll cut it short, but we have developed a very unique model under my leadership. One is we coach, counsel, and mentor family business students to take their businesses to the next level. As of now, we are not charging any fee, and we categorically tell the student not to sit in placements, but we help the student to align to the family business objectives, and we talk to the parents and etc. And these students, once they receive mentorship, they recommend to their other family business counterparts, for which we charge consulting. So we have opened up a family business accelerator consulting based incubation model. Yeah. We have a mentor board where we have done around 47 mentors nationally. They come, they take workshops, and then they professionally announce their mentoring services, and there's a revenue share coming out of it. We also write family business case studies. So there are 11 sources of revenue. The fun part of it is that these guys are not seeking funds. And therefore, we cannot earn out of giving them funds because they are family cash rich. So we have found out a new niche. Our university also has an incubation center called MUIRR, Marwadi University Innovation and Incubation and Innovation and Research Center. Now, as of now, they're not earning per se, but they're getting around 4 to 8 crore rupees of government grants. But 67 student startups have shifted from idea stage to prototype stage to business stage now. And I'm also a mentor. They have corporate mentors also, and they have good academic mentors also, and they are also helping. So where can they earn and where are they earning? They are, see, every startup wants many services: social media marketing, legal services, firm registration, office setup, maybe brochure printing, research, product validation. So this incubation center is a bit unique. Using the government funds, they have tied up with agencies. Now, the other greater idea is they are motivating students to start startups which can provide services to these startups. Example, there's a girl who is doing a spirulina-based products, protein hyper. There are one boy and one girl who want to set up sanitary pads made out of bagasse. Wonderful, and they won some awards also. So they only have an idea, but they need social media help. So then one student is coming up with a platform for digital marketing. They need legal help. One law student from the university setting up an app, a legal business.
So what do you did differently? What is different between how you are doing with things and how and why can't these universities do it? I mean, what differently you are doing and what should these universities learn from you? So what they are not doing is they're not having the passion to the core. And either the person who is running doesn't have it, or the CEO or the promoter is not pushing it very hard. That's what they are not doing. Okay, and And sir, it one just more becomes question, just for the better understanding for the audience. Is it self-sustaining or it's university funded, your incubator, Marwadi no, business? it's government. Our incubator is government funded. The family business accelerator is funded by the university. Okay, and either of the one, is it like self-sustaining or making any kind of money? So the government means the incubator is self-sustaining, and they charge a consulting fee also to the incubator. Our family business center is around 1 year old, so we have just developed, and from 5,000 students in the university, now we are talking of around 1,800 students, those who have registered, and now we are going to professionally build them to coach, consult, and mentor. And So in we will times to also come, will it yes. be self-sustaining? So our vision for the family business center is that uh, we will give employment to the students who are seeking internships and employment. And we will build the family business for getting talent across the university. Example, here is a FMCG family business, large business, 45-50 crore rupees of turnover, and they want salespeople pan India to travel and do some market research and etc. So I will hire a market research faculty. I will pay him, and I will build the family business to get the interns and to get the consulting of the faculty. So it will be an internal systemic university system where we learn a lot. Second, once we develop the expertise which we already have in coaching, consulting, and mentoring, we are going to offer it paid mentoring services to family businesses pan India. So that we will learn. Family business accelerator will learn from that. Now, answering your question, assume university is not funding, assume university is not getting government resources to fund. How do they develop it as a revenue model? They can charge for paid courses in entrepreneurship. So it can be launched as an academic course and students can register, or they can tie up with Coursera or other things and they can earn from that. And then across the value chain. So example, idea generation, So these are for people, those who are not seeking funds, but only seeking incubation support. Now that's a big market, which no university in India has currently. I mean, it's a big claim. I have to do research, but non-funding pure incubation support paid. That is a gray area for India. That's a gray area for India yet. So I take students, I support them, I charge them, and they don't take money from the government, but they want pure incubation support, so mentors from the university or mentors from outside. Yeah. It's basically business coaching. Not coaching. Coaching is different. So, I mean, sorry, I'll speak for half a minute. Coaching is the worst misunderstood term in India. Only International Coaching Federation, for which I am accredited for, can define coaching. Coaching is a process of asking questions and not giving answers. What you are talking of coaching is trainers turned coaches or speakers turned coaches, those who guide, counsel, consult, mentor, and give therapy. That is not coaching. So that is so yeah. So okay. Great. I get it. So yeah. Okay, now moving to my next question. Is it possible that a private person like you and me, who has genuine flair to help entrepreneurs, can set up something like an incubator or something which can genuinely help people, and it can be self-sustaining also? It can earn money. You tell it whatever name you want. I mean, so fundamentally you are incubating. Even if you're mentoring, you're incubating. Even if you're coaching, you're incubating. Even if you're consulting, you're incubating. Even if you're supporting, you're incubating. I mean, an individual like you can set up an institution which can even make money for itself and can help people in the most genuine way. Yeah. So is it I'm already in possible? the process of setting up a digital incubator always. So yes. So yes, this is what you'll like to know about. Yes. There are people. There is one person in Rajasthan called Sumit who is already running a digital incubator. Okay. And
all services which a professional university incubator may provide, he is giving. So, and my plans are also to do the same later in my career. So you should be yourself an entrepreneur, number one. You should have something to give, number one. Number two, you should have a price value equation which sets, because you're going to build a startup. And if the startup is not funded, they will not have money. So you'll have to help them to get money first. So that is the first level of mentoring, or you may get it from the government, you may get it from the private investors, you may get it from anywhere. And you can bill them 4 to 8% of the money that you bring to them. One. Second, you can bill them for your network. I bill my startups for opening up my network. They are, from my limited experience of coaching, mentoring, counseling, training, and helping around 35, 40 startups. Some of them are very big now. They actually don't want support. Actually, they want your network or they want your money. And they want a hardcore This is a very true thing you have told. I'm really glad to hear this from you. They want hardcore hand-holding. Okay. So therefore, the non-student money-paying outside professional startups, they can be divided into two parts. One, those who want to do something and don't know how to. So unko idea bhi nahi hai. So that is the teaching, coaching, consulting process for which you can bill per hour or for the full cycle or whatever. And the second is established people, 1-2 saal ho gaye, MVP ho gaya hai, and they know what they are doing, but they either want money or network, and they call it mentorship. And the third best model, which I am also doing now, and one or two of my investor friends are also doing. So they are already well-established business people, and they search for these startups, and they charge equity against mentorship, which is 4 to 8%, and then they exit. So how do they exit? Yes. So I'll tell you. So a startup is set up, it grows, it has some traction. 3-4 years काम किया है, 25-50 लाख 1 करोड़ का सेल्स हो गया है, and at a 6x valuation, 8x valuation, उसका valuation 8 करोड़ है. Now 8 करोड़ के 4% लेवल पे आपने 32 लाख आपका मेंटरिंग का चार्ज किया है, करेक्ट, और नेटवर्क ओपन करने का चार्ज किया. नाउ थोड़े सुपर स्मार्ट पॉलिटिकल मेंटर्स भी होते हैं जो अपने बिजनेस को फायदा हो ऐसे नेटवर्क उसको ओपन करके देते हैं. So that is different game. Sometimes they discuss. So 32 लाख मेरा इन्वेस्टमेंट हुआ मेरे टाइम का, क्योंकि पैसा तो वो दे नहीं सकता है. नाउ ही ऑल्सो, और उसको फंड भी लाके देंगे. सो उसको 8 करोड़ के वैल्यूएशन पे 10% इक्विटी 80 लाख हमने लाके दिया. अभी मेरे को अब भी निकलना है तो 80 लाख में से 32 लाख मैं लेके जाऊंगा. अब भी निकलना है तो सेम वैल्यूएशन पे. और अगर मेरी मेंटरशिप से उसका वैल्यूएशन 8 करोड़ से 20 करोड़ पे पहुंचता है ना, तो ये 32 लाख 16 लाख का हो गया ना, 32 लाख करोड़ का हो गया 8. So that's a game which you can play. Okay, I have one question here, very practical question. ये मेंटर जो इतना 4% ले रहा है, ये कितना टाइम उसको देता है, ये कैसे एंगेजमेंट उसके साथ करता है, और क्या इनमें डिस्प्यूट नहीं होता है, क्योंकि वो 8% इज टू मच, या अगर हम एवरेज निकाले 5-6% इज टू मच, वो नहीं दे पाया उतनी वैल्यू. 8 is just a number. चलिए, मतलब 4 कुछ ही नंबर का भी ले लिया, बट सो स्टार्टअप के पास पैसा देने का है नहीं, और एकेडमिक मेंटर्स उनको चाहिए नहीं, और आपका नेटवर्क ओपन कर रहे हो. सो सजेशंस आर फ्री, नेटवर्क इज नहीं. सजेशंस आर फ्री. सो मेरे पास कोई आता है, सर मेरे को फ्रेंचाइजी लेना है, पहले 15,000 रुपया रख तू, नेक्स्ट आधे घंटे का फिर मैं मुंह खोलूंगा. सर 15,000 रुपया, ओके सर अभी बोलो. हाँ, तो इसको मिलके आओ, ये ओनर है ये ब्रांड का, मैं उसको ही कोच और कंसल्ट कर रहा हूँ, और वो ये रीजन में एक फ्रेंचाइजी ढूंढ रहा है, तेरे को भी मेंटर करूंगा, उसको भी मेंटर करूंगा, मैं दोनों पास से पैसा लूंगा, और इसका ये उसका मैंने 4-8-10 महीने का काम मेरे 22 साल के एक्सपीरियंस से 1 मिनट में करके दिया. समझ में आ रहा है? तो उसका मेरे नेटवर्क ओपन करने का मैं पैसा लेता हूँ सर, और उसको पूछता हूँ तेरे को नेटवर्क, सो तेरे को नेटवर्क चाहिए, तेरे को ज्ञान चाहिए, तेरे को सपोर्ट चाहिए, ये तेरे को झटका पूछ चाहिए, तू बोल क्या चाहिए. तो सर मेरे को खाली पूछ चाहिए. ठीक है, तो फ्री आ जाओ, बात करते हैं. नेटवर्क ओपन और कितना, और ये कैसे सेटल होता है कि
क्योंकि सर ये बड़ा ग्रे एरिया है, एक्सपेक्टेशन कुछ पता नहीं है वो आपके नेटवर्क का। ही इफ ही डू सो जस्टिस टू आप हिमसेल्फ, टू प्लीज टेल अस अबाउट डिजिटल इंक्यूबेशन। क्या आपकी डिजिटल इंक्यूबेशन का प्लान है, या अगर किसी को अपना एक इंस्टीट्यूशन सेटअप करना हो तो वो कैसे स्टार्टअप्स को अट्रैक्ट करे, वो कैसे मेंटर्स को अट्रैक्ट करे, स्टार्टअप्स को वो क्या ऑफर करे, मेंटर्स को वो क्या ऑफर करे, आपस में कैसे कोऑर्डिनेशन सब उनका कुछ बिठाए? सब्जेक्ट, सब कुछ सब्जेक्ट. So then he becomes a business person, correct? And he has to figure it out. So if I want to float my incubation services, I have to ask myself a question: what is the product that I'm offering, or service which I'm offering? What is the market value, and how much will people pay to me? And is there a market at all? And I have to start giving free services first. लोग ऐसे ही नहीं आएंगे. And धुरंधर काफी पड़े. These VCs and angels have themselves become mentors. Chartered accountants have become mentors. And the game has gone to funding, which is wrong although, but पैसा आ गया तो हम सब कुछ कर देंगे. So जो पैसा निकाल के दे सकता है इन्वेस्टर का, वो सबसे बढ़िया मेंटर है. बाकी सब सर्विस हमको नहीं चाहिए. और मैं आपको बताऊं, एकदम गंदी चीज बताता हूं, इंडिविजुअल मेंटर्स के लिए बिजनेस प्लान 8,000 में बनता है, 50 पेज का. 12 स्लाइड की पिच डेक 6,000 से लेके 25,000 रुपए में बनती है. यानी जितना दिखता है उतना रोजी नहीं है. हाँ, बट अगर आप आपका कल्ट बना सको, जो मेरा कल्ट है अभी, तो आप आपका कल्ट बना सको तो देयर विल बी पीपल हु वांट. सो मैं क्या करता हूँ, आई बिकम अ मेंटर एट इंस्टीट्यूशंस एंड आई वर्क फॉर फ्री विद 15-20 स्टार्टअप्स पर इंस्टीट्यूशन, स्टूडेंट स्टार्टअप्स. एंड देन आई फिल्टर, एंड हर यूनिवर्सिटी, हर इंस्टीट्यूशन में से 2-3 अच्छे मिल जाते हैं जो 2.5 लाख ले लिए, 10 लाख ले लिए और अभी नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रोथ में जा रहे हैं. और वो उनको ग्रेजुएशन के बाद जब वो बंदा फुल टाइम एंटरप्रेन्योरशिप काम करता है, वो आपको पैसा दे सकता है. वो आपको पैसा कंसल्टिंग का, मेंटरशिप, कंसल्टिंग, इंक्यूबेशन, नाम तो बढ़िया है जो नाम दो. और उसने आपको एज ए फैकल्टी देखा है, उसने आपको एज ए मेंटोर देखा है, तो उससे आप बिल कर सकते हो. और वो भी सीरियस है, क्योंकि सीरियसनेस कब दिखती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जब आप रजिस्टर करते हो तब आप सीरियस हो. बाकी टाइम पास कर रहे हो तो आप टाइम पास कर रहे हो. मतलब अगर आप इकोसिस्टम में हो ऑलरेडी, आपकी जो काबिलियत है वो स्टार्टअप को समझ में आ गई है, देन आपका एक जेन्युइन गेम स्टार्ट होता है. स्टार्टअप यानी स्टूडेंट स्टार्टअप जो आगे जाके प्रोफेशनल स्टार्टअप बन रहा है, उसको आपकी इक्विटी पता है. जो प्रोफेशनल स्टार्टअप्स हैं, स्टूडेंट नहीं है, या तो एग्जांपल कोई सीनियर एम्प्लॉय ने छोड़ के कुछ धंधा चालू किया एक्सेट्रा, तो उनको तो आपको पहुंचना पड़ेगा ना. तो वो तो एक धंधा हो गया, दैट्स अ बिजनेस. तो देन उसका तो पूरा अलग है, वो तो इट्स अ बिजनेस फॉर यू, राइट? सो बट रेवेन्यू सोर्सेज आर एज फॉलोज. ज्ञान का पैसा है, आपका नेटवर्क ओपन करने का पैसा है, आप उसमें को फाउंडर बन सकते हो अगर वो अलाउ करे तो. और इक्विटी की गेम है, वैल्यूएशन की गेम है, बाकी कोई गेम. एग्जांपल, अनुपम मित्तल साहब ने 1.25 करोड़ में 1% इक्विटी ओला का लिया था 2004-5 में या 10 में. आज वो 1,200 करोड़ का है. वो तो मैं खुद इन्वेस्टेड हूँ 5-6 स्टार्टअप. ओके. वो एज ए इन्वेस्टर मतलब आए थे अनुपम मित्तल जी, तो इन्वेस्टर, मतलब एंजल हाँ, इन्वेस्टर. फिर मेंटेन तो करना ही पड़ेगा ना, आपका पैसा है तो भाई. 2.5 लाख से 5 करोड़ की टिकट साइज होती है, तो अगर आप 2.5 लाख डाल सकते हो खुद के पैसे, अगर वो आइडिया अच्छा है और उसको अपने रूट पे लेके जा सकते हो, और एग्जिट टाइम पे करना आपको आता है वैल्यूएशन की गेम खेल के, तो आप बहुत पैसा बनाओगे. बाकी आप बोलो कि वो एंटरप्रेन्योर आपको पर आवर मेंटरशिप का 5,000 देगा, वो नहीं देगा. तो ज्ञान का पैसा नहीं है, नेटवर्क का और फंडिंग लाने का पैसा है, ज्ञान का पैसा नहीं. ज्ञान का पैसा आपको स्टूडेंट देगा. बहुत प्रैक्टिकल आपके इस कॉन्वर्सेशन में चीजें निकल के आई हैं, और एक असली में जो एग्जैक्टली हो रहा है और कितना रेलिवेंट है जो हो रहा है. सर मैं थोड़ा सा समराइज करता हूँ हम लोग की कॉन्वर्सेशन को. इन जो इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, जनरली दे आर नॉट क्रिएटिंग जेन्युइन एंटरप्रेन्योर्स एंड बिजनेसेस. वो एक student centric incubation centers are not. student centric incubators are not doing this thing. बस वो मनी डिप्लॉय एक तरीके से हो रहा है. हाँ जी, they are trying hard. They are trying hard. Okay. और कुछ अच्छे मॉडल्स निकल के आ रहे हैं कहीं कहीं पे, जहाँ पे मोटिवेशन बहुत ज़्यादा है करने का.
बट अगर रियल धंधा करना है तो फिर उसके लिए ये सब चीज़ों में चक्कर में नहीं फंसना चाहिए, रियल काम करना चाहिए और रियल मेंटर्स ढूंढने चाहिए। और रियल मेंटर्स जरूरी नहीं है कि आपसे हमेशा पैसे लें, जनरली कई लोग तो ऐसे कर देते हैं जैसे हम लोग भी कर देते हैं। और जब आप इस लायक हो जाओ और आपको लिटरली एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए एक लेवल के बाद ग्रो करने के लिए, देन यू हैव टू पे फॉर दैट नॉलेज एंड इट पेज ऑफ इन इन इवन द शॉर्ट रन। तो ऑन दिस यस, आई थिंक एंड मास लेवल पे मोटिवेशनल स्पीकर्स की जरूरत है जो लोगों को उत्तेजित करे कि जॉब इजी अच्छा है, बिजनेस उससे भी इजी और भी अच्छा है, लेकिन बिजनेस करने का डिसीजन टफ। तो व्हाट स्टॉप्स यू एंड योर बिजनेस इज अ डिसीजन टू डू बिजनेस, बस, बाकी कुछ नहीं है। सो वो सही। डिसीजन मेकिंग में हेल्प करे ऐसे मास मोटिवेशनल स्पीकर्स चाहिए, बस, और कुछ नहीं चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा लगा सर। लेकिन और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके में हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं, तो हम लोग फिर से करेंगे, दो तीन टॉपिक पकड़ लेंगे, बस उसी में एक दो डिस्कशंस और करेंगे जो बहुत ज़रूरी है लोगों के जानने के लिए। ये चलिए, ओके सर, ऑन दिस नोट थैंक यू सो मच। बहुत मजा आया, थैंक यू सो मच। और अगर मेरी और आपकी कन्वर्सेशन सुन के हम एक एंटरप्रेन्योर को भी आगे बढ़ा सकते हैं, और या तो एक इंक्यूबेशन सेंटर अच्छा काम कर सके, कर रहे हैं लेकिन और बढ़िया काम, या तो एक कोई एक छोटी यूनिवर्सिटी या कॉलेज अपने कॉलेज में इंक्यूबेशन सेंटर सेट कर सके, तो अपना ये 1-1.5 घंटा फायदेमंद गया, ऐसा मैं सोचता हूँ। बिल्कुल सर। बट और इन टुगेदर मिशन फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। थैंक यू सो मच, बढ़िया लगा। थैंक यू सो मच सर। ओके सर, बाय।